if you wish to create a website like this using Firebase Studio, then this video is for you. Because in this video, I will be going to let you know that how you can develop your own website, how to generate a build, how to host it and publish it for completely free. And by the end of this video, I will also provide you a bonus part. So without wasting any time, let's get started. So hello everyone, it's me Harshit and चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस डेवलपमेंट पार्ट को. Okay, so I'm here on my computer screen and you can see we have Firebase Studio open here. So this is the main tool which we will be going to use today for this website application development part. So as you can see, this is full stack AI workspace. So to open Firebase Studio, you can just go to Google and directly search for Firebase Studio over there. So you will, once you get the link for Firebase Studio, you will be directed to this interface, and even you can search Firebase directly. And once you select Firebase directly and click on the link, this might be the interface which you will be getting. And by clicking here, you will be redirected to this interface. Okay. So you just need to click on Get Started or Try Firebase Studio. So I'm just clicking on it. And for sure, to access Firebase Studio, you will be needing a Google account, which I think everyone has as of today. Okay, so as you can see, it's is my name, hello Harshit, and this is the area where we can type the prompt and start creating our amazing website directly. Okay, but once we have created our website, there is one more extra tool which we will be going to need, which is cursor. We will be needing cursor to export our website or to generate a build, and then it is required so as to publish it on some hosting. So we will be needing cursor. So what you need to do, you just need to visit cursor.com, or you can actually search it over the Google. And once you are on this website, you can hit download for Windows, and this will start the downloading for Windows, or even you can select macOS if you are using a Mac operating system. Okay. So this is cursor, and once you've downloaded and installed it, this will look something like this. So this is the interface of cursor. It's like a AI IDE, which will help you in like rewriting your code or like writing your code based upon your prompts. Okay, so this we will be going to need so that we can generate a build without no much extra hassle. You just need to give a prompt and it will generate a build which you can directly upload on your hosting. So this will be very simple. So after installing it, you just need to create an account and log in into your account. So I've already created my account and logged into that. So this is how cursor looks like, and you can see I'm using the free plan here. Okay, so now going back to my web browser. Okay, so first is Firebase Studio, which we will be going to need, and second one is cursor. And after that, this is the prompt which we will be going to use today to design our website. Okay, so let me copy this, and this is a event website which I'm going to design today. But if you wish to learn how to create more amazing websites, there is a link in I button and description. You can check out there. I have created more videos on that purpose as well, where I will be explaining the same thing from very starting, and I have explained you that how you can create some amazing websites. Okay, so continuing, once we have provided the prompt and even like designed our website and even use cursor to export a build or generate a build, after that we will be going to need a tool known as Hostinger, and there is one more free hosting where we will be going to see, which we will be going to use, that how we can publish our website on Hostinger or like make it live, and even we will be going to see a freeware. So without wasting time, let's jump back to Firebase Studio, and here I'm going to directly paste my prompt. Okay, so this is the very first part of designing our website. So I have provided it with a prompt. If you wish, you can do some changes. For now, I'm just using this prompt, and if you wish, you can also attach some images which will help you or like help your Firebase Studio and designing it more accurately. So for now, I'm just clicking on prototype with AI. And let's wait for the result. Okay, so my prompt is given to Firebase Studio. Okay, so now it's like doing its research and preparing a blueprint. We can check the blueprint and color and whatever we wish to check here. And once we are like ready, we think like if it is like a good to go, we can just click on prototype this app. Okay. So I think this is fine for now, but if you are designing something very specific and have some specific requirements, you can check it in more detail and even like customize it accordingly. But for now, I'm just clicking on prototype this app. Okay. And once I clicked on prototype this app, it will start the main development process, which is like it will start writing the code for this website application. Okay. So coming back to our prompt over here. So this is the prompt which we have used. And now our Firebase Studio, depending upon that prompt, is generating our website.
So let's wait for this. So till the time we are waiting, let me tell you something. Now, if you're facing any difficulties with your projects or need a website or need support in your website or facing any bugs, then you can reach out to us on the given email ID or the link attached in the description, and we will for sure help you out in bringing your website live and resolving all those bugs. So now you can reach out to us on the link attached in the description. So don't miss the opportunity. Click on the link in the description. Okay. Okay, so now here our website is ready, and as you can see, it looks pretty interesting. Okay, so this is our website for the event, and it's just as we requested it, like with the big fonts written at the top and some bright colors, dark theme, and okay, and even like tickets pricing it already like added in the website. Okay, so now if you wish to make any changes, you can write the prompt like further prompts here, and you can ask it to make some changes or add much more details. So let's say just for an example, let me add. Okay, so I'm just like providing a single prompt to just as to show you that we can provide a prompt like this and make or like add some more effects. So I've asked it to add some cards and a palace effect and even like some glass morphism effect. Okay, so let's wait for the result. Okay, so you can see now our like website is according to changes is ready, and let me scroll. Okay, so there's kind of a glass morphism effect on this like top bar. You can see this effect over here. Okay, that's great. And even we can see glass morphism effect over here. And this is something I think this is done like incorrectly. Okay, we will see this later. Okay, cards are there, and even like if you refresh, this is a kind of typewriter effect is there. So for now I'm just leaving this as it is, but like the best part about Firebase Studio is you can use unlimited prompt. There is no limit. You can provide as many as prompts you wish and can make as many as changes you wish to make in your website. Okay, so for now what I will be going to do, I will be heading to the switch to code section. Okay, so this is how the coding interface looks like, and here I can edit my code accordingly, and even I can use switch back to again to the prototyper mode where I can provide the prompts and can make changes on the basis of prompts. Okay, and there is an also Gemini option over here, and while doing the coding over here, you can communicate or chat with Gemini and ask Gemini to make some changes into your like website. Okay. So for now, to publish this, I will be going to leave this as it is. You can do as many as changes you wish. You can just type your prompts here and can make changes as according to your requirements. But now let's move to the build part. So first part of development is done from my side. So next part is generating a build. So as to generate a build, we first need to download this code to our system. Okay. So here, if you see, it says main. Okay. So for this, if it is not visible, if you are going to click over, this might ask you to connect your Firebase Studio with your GitHub. So GitHub is another app. So you need to create an account on GitHub. Okay. You just need to create an account over GitHub, and then you need to connect it over here, because on GitHub, we will be first publishing our code. Okay. So extension GitHub wants to sign in using GitHub. I will be allowing it. Okay. Copy and continue to GitHub. I need to click. Here I need to log in, or you can directly log in with Google, but for now I'm logging in my account. Okay, and I will be going to click on continue, and there's a code automatically already copied when I clicked on copy. So you just need to paste it. I pasted the code and click on continue. Okay, now it is asking for permission. Let me authorize it. Okay, it's done. Okay, so now let me go back here. Okay, now it is asking me to publish this code on my GitHub repository. So like if you don't know about GitHub, so you can like, let me just explain it simply. You can store or save your code, all of the files on GitHub. So you just need to create a folder on GitHub. So it is asking to create a private or public folder. So for now I'm clicking on private repository and with the name of a studio. So let me change this to
Nova Streams event. Okay. And private repository I'm going to create. Okay. So you can see now it is showing publishing to GitHub, uploading files. So it is uploading all of these files to GitHub. And from GitHub, then I can download all of my coding files. Okay, so it is saying it's done. Let me click on open on GitHub. So now you can see these all files are on my GitHub account. And what you just need to do, you just need to click on here and download the whole zip to your computer. And after this, whatever your website you have designed over here, so once you have done designing a whole complete website, then you can perform this step of publishing the code to GitHub and then downloading the code from GitHub. So now you can close this window as well as this window because we don't need them. Now we will be going to use Cursor. So I hope you have already installed the Cursor. So let me close this window as well. So now the code is inside my download folder. So let me jump to my PC and then to the download folder. Okay, so this is the code I will be going to cut it. So let me cut it. Okay, and create a new folder on desktop. Okay, so here's my folder and let me rename it. And paste the downloaded file here. And then I'm going to be going to extract it here. Okay, so now my downloaded code is here. Okay, so this is the folder which contains all of my downloaded code. So now you can delete the zip file if you wish, but we will be keeping it just for safety purpose. Now you need to click over here and now we will be going to use Cursor and this prompting Cursor. So let me copy this prompt. Okay, now what you need to do, just visit this folder and now you need to open this folder inside Cursor. So you need to open this folder inside Cursor. So this one is we need to open. So what you need to do, just go to your Cursor, directly open your Cursor and click on open project. Now go to that specific folder. So it is Nova Streams. This is the folder. Okay. So I need to select it and select folder. Okay, so now you can see the same folder or like all of my code which is there on Firebase Studios. Now I can access it inside like Cursor AI. What I need to do, I need to go to chat. Okay, so you need to go to chat or you can even like toggle the pane from here if it is not visible and type your prompt here. So I'm just going to paste my prompt. Okay, so it says that currently my website is edited using next.js and I'm not able to publish it on my like normal hosting like Hostinger. And I will be asking that AI to provide me with a zip file which contains HTML, CSS and JavaScript code with all of the images so that I can directly just publish it. So I will be giving that prompt. Okay, let me select a free model. Let me click on auto and then give the prompt to it. Because we will not using any premium model. You can do it completely for free. Okay. Now it is analyzing my prompt and making the changes accordingly. So this will do this in 3 steps. Okay. Now asking me to run some command. This is the command to generate the build. Okay. So you just need to follow the instructions and run all of the commands it is asking you to. Okay. Now it is asking me to generate build. Again, another command. I need to click on run. Okay. Now it is asking me to create a zip file. So I will click on run and then whatever the build it has generated for the website which we have designed on Firebase Studio, it will be going to create a zip file for the same. Okay. So now you can see it has done all of these steps and you can see it even checked that whether the zip file is there and now the final command. Okay, so now it's finally done. You can see it has generated a zip file into your local machine as well. And inside the same folder, you can see static site.zip. Now, if you go back to the same folder over here and inside, now you will find a zip file over here, static site.zip. This is your main website file. Now, what I will be going to do, this is the main file which I can host directly on any of the hosting. So I will be going to use this zip file and let me paste it, let's say over here. Inside this folder at very starting I will be pasting this file and let me extract all.
Okay, so these are the files which I can directly upload on any of the hosting. So for now, let's start with publishing this. So this part is also done. Now we will be going to do this in two ways. So first one, we will be going to show you using the Hostinger, and then second one, we will be going to use using the Firebase. So you can go to console over here on the Firebase. So Firebase Studio and console are two different things. Using console, you can create a project and can use Firebase free web hosting, and then you can host a website completely for free. So now if you're using Hostinger, so like if you don't have an Hostinger account, then as mentioned previously, we will be providing a 20% discount with which you will be going to get a domain for a single year. So if you purchase any of the plan with the link attached in the description, you will be going to get 20% discount instantly. Okay. So now I'm on Hostinger. Now, if you are on Hostinger, what you need to do, you just need to go to website. And after going to website, this is the option which will come in front of you. You just need to click on add website. Here, what you need to do, you just need to select custom PHP HTML website. Okay. So now I need to select this. And here you can skip this part. Here you can select any domain, but for now I'm using a temporary domain. Okay. So now our website on this domain is ready. You can connect a domain by clicking here whenever you wish to connect, or like wherever or whichever domain you wish to connect. But for now, let's see this website. So this is how a website looks like. Now what you need to do, you just need to click on File Manager. Go to public HTML and delete this default PHP. Now we need to replace the contents inside this folder with the contents of that zip file we exported using cursor. So you just need to select all and drag and drop them over here. So all of them are uploaded. Now if you go back again to that website, now it shows your website. So finally your website is live, whatever or whichever website you have created, and it's perfectly working with all of the images as well. And even it is showing that fav icon. So if you wish to replace that fav icon, this icon, you can just replace this icon but keep the names here. And like if you wish to design mode, you just need to make all of the changes here. Again, you just need to publish it on GitHub and then download from GitHub and then generate a build and then upload again on Hostinger. So this is the process which you can follow to upload your website on Hostinger. Now there is one more way using Hostinger. Let's go to website again. Click on add website. Now there is one more option which they have recently added, which is Node.js web.app. So you just need to click here. Okay. Import from Git repository. Now you can directly connect to GitHub. Okay, connect with GitHub. I will be going to click here. And now you can select only repositories and select the repository which you wish to select. For sure, for the very first time, you need to provide it the access to your GitHub account. Okay. So it says, and now install and authorize. So this is the very direct way where you don't need to use cursor. You can directly install and make your website live on Hostinger. But if you don't have Hostinger account and you wish to generate a manual and like a build like this, then you will be going to need cursor for sure. Okay, so you just need to click on deploy because we are using Nest.js. I will not be making any changes. Your website is deploying. So this might take a few minutes. So let's wait. Okay, so now you can see this website is again ready by directly connecting it with GitHub repository. And you can see this website is also live and working perfectly fine. So these are the two ways using which we can deploy our website. First one is generating a manual build, which is like most required for normal hosting. But now as Hostinger supports the option of directly publishing the website, so you can just go to website section here, go to website list, and then click on add website, and now can select Node.js website application. And even if you wish to not connect your GitHub directly, you can just upload the files. So which files we have downloaded from GitHub in starting, like by going over here and by downloading the files, you can also upload all of these same files here in Hostinger from this option. So these are the two ways. Now let's move to another way. ओके सो अभी हम अपनी वेबसाइट को फायरबेस कंसोल पर फायरबेस की फ्री होस्टिंग पे अपलोड करने वाले हैं. तो फायरबेस कंसोल में जाके आपको एक फ्री प्रोजेक्ट बनाना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सेक्शन आएगा. यहाँ पे आप उसका नाम देना है. तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया. आप कंटिन्यू करते हैं
एंड दिस इज द ऑप्शन। अगर अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना चाहते हैं कितने यूजर्स विजिट कर रहे हैं वगैरह, तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स पे आपको डेटा मिलता रहेगा कि कितने यूजर आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, तो वो सब ट्रैक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा एंड हमारा फायरबेस कंसोल पे एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। सो इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरे वेबसाइट एप्लीकेशन के लिए बनाया है, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया है। बट यहाँ पे iOS वेब और काफ़ी तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अपने एप्लीकेशंस बना के होस्ट कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम सिर्फ इसको वेब होस्टिंग के लिए करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल देके समझाने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम काफ़ी तरह की प्रोजेक्ट्स बना के होस्ट कर सकते हैं। और ये जो फायरबेस है वो फायरबेस स्टूडियो की तरह ही फायरबेस कंसोल एक दूसरा प्लेटफॉर्म है गूगल की साइड से। बट आप फायरबेस स्टूडियो पे फ्री में वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फायरबेस कंसोल पर जाकर यहाँ पे वेब होस्टिंग यूज करते हो तो उसका फ्री में होस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको चलिए होस्टिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है होस्टिंग वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको अपने पीसी में परफॉर्म करने होंगे ताकि आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकें या पब्लिश कर सकें। तो इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं एंड हमें कुछ चेंजेस अपने फोल्डर में करने होंगे, तो इसको कॉपी करके वापस चलते हैं। ओके अभी हम अपने उस प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है जहाँ पे हमारी मेन कोडिंग की फाइल्स हैं जो हमने डाउनलोड की हैं। तो अभी ये दूसरा प्रोजेक्ट है, तो ये हमारा मेन फोल्डर है, यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके आपके मेन फोल्डर में आ जाना है जो आपने डाउनलोड किया हो गिटहब से या फायरबेस स्टूडियो से। एंड वहां पे आने के बाद आपके यहाँ पे CMD लिखना है सर्च बार में ऊपर इधर एंड एंटर करना है। चलिए इसे मेन फोल्डर में करते हैं बिल्कुल बाहर। तो बिल्कुल बाहर हमें आके इस फोल्डर के यहाँ पे CMD लिखना है एंड इस तरीके से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ कुछ कमांड्स हमें एग्जीक्यूट करना है जो हमारी हेल्प करेंगे फायरबेस को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्टॉल करने में एंड देन डिप्लॉय करने में। तो मैंने पेस्ट कर दिया है, इसको एज इट इज आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके लिए आपको npm इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, जो कि नोड पैकेज मैनेजर है इस कमांड को रन करने के लिए, जो मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है। बट सिंपली आप गूगल पे जाके npm इंस्टॉल विंडो सर्च करेंगे और इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ से आप अपने पीसी में लैपटॉप में npm इंस्टॉल कर सकते हैं। तो npm इज रिक्वायर्ड ताकि हम इस कमांड को चला सकें। तभी मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे इसको लोड करना स्टार्ट कर देगा। तो जरूरी जो टूल्स हैं फायरबेस टूल्स उनको ये कमांड हमारा इंस्टॉल कर देगा, बट मेक श्योर npm इंस्टॉल हो। ओके सो आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एंड अगर इसी सेम चीज पर आपको डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए, अगर आपके पे npm इंस्टॉल नहीं है, आपको कहीं डाउट आ रहा है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहां पे मैंने सेम टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है सिर्फ फायरबेस होस्टिंग को लेकर, जहां पे मैंने सारे स्टेप्स शो किए हुए हैं किस तरीके से आप npm इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है एंड किस तरीके से आप फायरबेस के सारे टूल्स इंस्टॉल करके वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे हमारी जो npm है वो इंस्टॉल हो चुका है, लाइक जो फायरबेस टूल्स है। अब अगला कमांड हम रन करते हैं, तो यहाँ पे आप वापस आना है फायरबेस कंसोल पे एंड अगला कमांड कॉपी करते हैं। इसको मैं एज इट इज पेस्ट कर दूंगा फायरबेस लॉगिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट पहले से ही लॉग्ड इन है। बट अगर आप जब फायरबेस लॉगिन पहली बार जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एक पॉपअप आएगा जो आपके क्रोम पे या वेब ब्राउजर पे डायरेक्ट करेगा, वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब इनिशियलाइज करते हैं इसे। ओके सो यहाँ पे हमें रेडी टू प्रोसीड यस करना है, वाई प्रेस करना है। एंड यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, तो हम होस्टिंग सेलेक्ट करेंगे, स्पेस बार आपको प्रेस करना है सेलेक्ट करने के लिए, एंटर से वो आगे बढ़ेगा। ओके अब अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग हमने पहले ही बनाया हुआ है फायरबेस में अभी थोड़ी देर पहले, तो उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जिस भी नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें अगर आपने फायरबेस स्टूडियो और कंसोल में सेम नाम यूज किया है तो मेक श्योर टू सेलेक्ट दी प्रॉपर वन। वहां पे उसका जो नेम है वो अलग होगा फायरबेस स्टूडियो का एंड कंसोल का। तो प्रॉपर प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाके एरो कीज से एंटर करें। ओके इसके बाद क्या आप एक पब्लिक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक नाम से बना देगा। एंड क्या सारी पेजेस को सिंगल पेज पे राइट करना चाहते हैं तो आपको वाई प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं वाई प्रेस करके एंटर करता हूँ। ओके ऑटोमेटिक बिल्ड विद गिटहब नो। ओके तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर हम उस फोल्डर में वापस जाते हैं जहाँ पे हमारी मेन कोडिंग फाइल थी, तो आप देख सकते हैं कुछ नई फाइल्स और पब्लिक फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। एंड पब्लिक के अंदर एक index.html हमारी फाइल यहाँ पे बन चुकी है अपने आप। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट वेब पेज मेरे को देखने के लिए मिलेगा। तो वापस चलिए उसी फोल्डर में वापस चलते हैं।
ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर जाना है, उसको डिलीट करना है जैसे हमने होस्टिंगर में पहले किया था, एंड इसको अपनी मेन कोडिंग फाइल से रिप्लेस करना है। तो ये सारी चीज जो आपकी मेन आपने डाउनलोड करी थी बिल्ड होने के बाद उनको कॉपी करना है या आपको यहाँ पे मूव करना है, तो वो सारी चीज मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। एंड ये हमारी मूव हो चुकी है सारी चीज। एंड ये हमारा रेडियस फोल्डर को चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं, अब कोई मतलब नहीं है, तो इस एक्स्ट्रा फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज डन। अब चलिए वापस कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं एंड यहाँ पे हम रन करते हैं अगला कमांड जो कि फायरबेस डिप्लॉय है। मेक श्योर इस कमांड को रन करने से पहले आप सारी फाइल्स पेस्ट कर चुके हो, और ये आप अगर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो ये सेम कमांड आपके यहाँ पे भी दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो भी आप देखते हैं यहाँ पे हमें कोई भी वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट है रिलीज नहीं दिखा रहा, बट जैसे ही मैं एंटर करता हूँ हमारी वेबसाइट डिप्लॉय होती है, वहाँ पे भी हमें रिलीज दिखने लगेगा। एंड जैसा कि मैंने बताया, मेक श्योर से पहले सारी फाइल्स आपने वहाँ पे पेस्ट कर दी हो जो आपकी वेबसाइट की एक्चुअल फाइल्स है। सो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहा है एंड जो भी सारी नई फाइल्स हमने डाली है उनको वहाँ पे पब्लिश कर रहा है। ओके, सो फाइनली इट्स डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने हमें काफी अच्छा सा एक होस्टेड यूआरएल दे दिया है जो कि seminar.web.app है। तो जिस भी नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया हो वहाँ पर जो नाम दिया हो अकॉर्डिंगली वही नाम आ जाता है अगर वो अवेलेबल होता है। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा सा एक यूआरएल हमें मिल चुका है एंड मैं इसको अगर ओपन करूँ तो जो भी आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन है जो उस कोड के अंदर थी वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी, जैसे हमारी ये हो रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो होपफुली यहाँ पे वो रिलीज आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिलीज आ चुका है जो कि अभी हमने रिसेंटली अपने कमांड प्रॉम्प्ट से रिलीज किया है। यहाँ पे हम जाके अपनी कस्टम डोमेन्स भी ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट या पहले से 2 डोमेन है फायरबेस की साइट से फ्री वाली, हम अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें पुराने डिप्लॉयमेंट्स या रिलीज दिख जाते हैं, हम यहाँ पर रिलीज सेटिंग्स देख सकते हैं एंड काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। हम यूसेज देख सकते हैं कि कितना यूसेज हमारी वेबसाइट पर है, कितने ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं, कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं। साथ ही में उसकी होस्टिंग, डेटाबेस, सब कुछ यहाँ फायरबेस कंसोल की मदद से मैनेज कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी। Okay, so finally we have understood the whole process of designing a website, then generating a build, and then deploying and hosting it on Hostinger and even on other platforms with multiple methods, and then finally publishing our website live. Okay, so I hope you enjoyed this video and your all doubts and questions are resolved. If you still have any doubts or questions, you can comment them down below and I will try to solve them as soon as possible. So if you like this video, please like, share and subscribe us, and thanks for watching. We will see you soon in the next video. Till then, bye bye.